हेलो एवरीवन। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ऑल। कैसे हैं सब लोग? मेरा नाम अरविंद है। हमें हैदराबाद बॉयज़ और मेरे साथ हैं सौरभ। हेलो अरविंद। तो चलो अरविंद शुरू करते हैं आज। काफी दिन मैं हो गए हैं। काफ़ी काफ़ी दिन हो गए हैं। इट्स ऑलमोस्ट 10-11 days. Both of us were swamped with work and could not match times to get on to do एब्सोल्युटली। the episode. But yeah, we missed almost doing 12 to 14 matches. So I thought we could quickly, go through. आई विल नॉट डू लाइक अ डिटेल्ड रिव्यू, बट मैंने सोचा कि एक बार थोड़ा रिफ्रेश कर लेते हैं मेमोरी हमारे ऑडियंस के लिए, एब्सोल्युटली। कहाँ से हमने करा था और क्या है द द स्टैंडिंग। और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि हाउ द टीम्स हैव डन सो फार। ओवरऑल एक हाई लेवल पे बात करेंगे, एज अ सॉर्ट ऑफ लाइक अ मिड ईयर रिव्यू बोलते हैं ऑफिस में, तो वैसे ही लेके मिड सीजन रिव्यू बोल सकते हैं। एसेंशली हम यही सोच रहे हैं कि टीम्स के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि उनको आगे करना क्या चाहिए, जस्ट टू गेट इनटू द टॉप 4, बिकॉज सीजन अभी खत्म नहीं हुआ है, बट वी आर गेटिंग इनटू दैट सेकेंड हाफ ऑफ द सीजन जहाँ पे थिंग्स कैन गेट वेरी इंटरेस्टिंग। तो हमने पिछली बार हमने जब वीडियो में बात किया था, वी टॉक्ड ऑफ द मैचेस टिल मंडे द 17th of April। तो ऑलमोस्ट 12 दिन हो गए हैं इसको देखते हुए, सो आई नो इट्स बीन अ बिट ऑफ अ गैप देयर। So I will not go in detail, but I thought मैं एक बार थोड़ा पढ़ लेता हूँ for our audience, just to refresh the memory of what happened since then, and then we'll go to the table quickly. तो 18th April को सनराइजर्स एंड मुंबई got in Hyderabad, and Mumbai won this game. They bet सनराइजर्स there. तो वो वहाँ पे मुंबई जीत गया था। उसके बाद उसके नेक्स्ट गेम हुआ था लखनऊ और राजस्थान का। ये जयपुर में हुआ था, और लखनऊ हैज बेट राजस्थान देयर। रेयर डिफीट फॉर राजस्थान बोल सकते थे। उस टाइम पे राजस्थान वाज डूइंग वेरी वेरी वेल, दे वर एट द टॉप ऑफ द टेबल। उसके बाद हमारा आया था रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और पंजाब। मोहाली में हुआ था ये गेम। 174 मारा था आरसीबी ने, एंड देन पंजाब में ओनली 150। तो ये गेम आरसीबी ने जीत लिया था। फिर थर्सडे को उसी दिन दूसरा मैच भी हुआ था, कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स का। ये क्लोज स्कोरिंग गेम रहा है। कोलकाता एक्चुअली क्रैश टू 127 और दिल्ली ने चेस कर लिया था। सो दिल्ली विनिंग स्ट्रीक में पहुंच गया था। दे ऑल्दो वेंट टिल ऑल द वे टू द लास्ट ओवर। ये गेम दिल्ली में हुआ था, सो दिल्ली वाज एबल टू बी विन एट होम। उसके बाद पिछले फ्राइडे को सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग मेट इन चेन्नई। सनराइजर्स अगेन हैड अ फॉल। 134 पे ऑल आउट हो गए थे, एंड देन चेन्नई वाज एबल टू comfortably win that game. Even though इजी। 8 balls में हुआ था, but that was a very comfortable game. उसके बाद पिछले वीकेंड के गेम्स में अगर आप देखोगे तो गुजरात टाइटंस लॉस्ट टू, सॉरी, वन सुपर जायंट्स। ये क्लोज गेम था। 135 लगा था कि इट विल बी अ वेरी इजी चेस फॉर गुजरात टाइटंस, बट लखनऊ कुड नॉट चेज इट। दे एक्चुअली गॉट आउट एट 128 फॉर 7। फिर एक हाई स्कोरिंग थ्रिलर रहा, वेयर पंजाब ने 213 मारा और मुंबई लॉस्ट इट बाय 13 रन। सो द मुंबई वाज एबल नॉट एबल टू विन दैट गेम। फिर पिछले संडे को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और राजस्थान रॉयल्स का हुआ था। एक क्लोज गेम रहा। बैंगलोर बेट 189 और रॉयल चैलेंजर्स गॉट आउट एट 182 फॉर 6। सो दिस वाज एक्चुअली अ वेरी क्लोज गेम। And then finally we had last game of that last weekend was Chennai bet 235 for 4. Again, a good performance from Chennai there, and Kolkata actually did well, did tried, but 235 थोड़ा ज़्यादा ही हो गया था। मतलब 50 रन से हार गए थे, but so always looking that Chennai would win that game, and they were able to do it. Quickly देखा जाए, दिल्ली कैपिटल्स मंडे को खेला था सनराइजर्स से। दिस आई थॉट सनराइजर्स शुड हैव वन इट। मुझे लग रहा था कि 144 wasn't a good score. टीम अच्छा खेल रही थी, बट देन दे हैड अ कोलैप्स अगेन, मिडिल ऑर्डर कुछ कर नहीं पाए, एंड देन वेरी क्लोज विक्ट्री फॉर दिल्ली। दे वन बाय 7 रन्स। उसके बाद वी हैड ट्यूसडे को गुजरात टाइटंस प्लेड विद मुंबई इंडियंस। दिस वाज एट अहमदाबाद। गुजरात टाइटंस got another 200 runs, 107 for 6. हालांकि टारगेट वाज लिटिल टू मच फॉर मुंबई देयर। मुंबई गॉट आउट एट 152 for 9. गुजरात वन दैट। तो उसके बाद वेडनेसडे को कोलकाता नाइट राइडर्स एंड रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर met in Bengaluru. Kolkata scored 200 again, and Bengaluru came close, but yeah, could not get to that winning spot there. 179 for 8 पे आउट हो गए। फिर उसके बाद थर्सडे को रॉयल चैलेंजर्स राजस्थान रॉयल्स एंड चेन्नई केम टुगेदर।
Royals bet 202, and Chennai was only able to score 170. So they were not able to get to that point. ये जयपुर में हुआ था, and there was a home victory there for Royals. इस फ्राइडे को LSG और Punjab Kings. I think I was able to see a glimpse of this one where LSG Marcus Stein has just destroyed it, 257 for 5. Punjab Kings tried their best, but 257, the highest score of IPL इस टूर्नामेंट का LSG ने किया था, और ये मोहाली I में think हुआ this is था. second highest. Second highest, sorry. Second highest overall, I guess. Second, possibly yes. And Punjab was not able to do that. और अगर हम इस वीकेंड की बात करते हैं, जो सैटरडे का गेम्स हुए थे, जो आज हुए थे, कोलकाता वर्सेस गुजरात टाइटंस. कोलकाता बिट 179. टाइटंस won that fairly comfortably, 180 for 3. दो ओवर तो रह गए थे ऑलमोस्ट. एंड देन अभी जो गेम अभी हमने रैप करा था, सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स का. सनराइजर्स स्कोर 197 for 6, and Rick Klassen finally came through. Delhi Capitals tried their best. Mitchell Marsh all round performance, 4 विकेट लिए उसमें और runs मारे, but close win for Sunrisers Hyderabad there, 9 रन से जीते. तो इस प्रकार टेबल आज ऐसे लग रहा है, इतने सारे मैचेस होने के बाद थोड़ा एक्चुअली लिटिल ओवर देन मिड सीजन हो गया है. 14 गेम्स खेलते हैं, सॉरी आई बिलीव 18 गेम्स खेलते हैं इस बार. आई एम ट्राइंग टू रिमेंबर कितने गेम्स खेलते हैं ये, बट आई वुड से इट्स सो इट्स लिटिल बिट मोर देन हाफ ऑफ द सीजन इज डन. Right. If you look at it, the table right now, table ऐसा लग रहा है. We have Gujarat Titans at the top. No surprises. हमें लग रहा था कि they will be there around. Rajasthan Royal is at second spot with 10 points. 10 points पे तीन टीम है. Rajasthan Royals, LSG और Chennai Super Kings. All of them are at 10 points. Royals have the higher net run rate, तो वो सबसे ऊपर हैं. और Chennai is at fourth spot, having the lower run NRR when compared to other two. 8 पॉइंट पे दो टीम हैं, RCB और पंजाब किंग्स. 6 पॉइंट पे तीन टीम है, कोलकाता, सनराइजर्स और मुंबई इंडियंस. और दिल्ली कैपिटल्स इज द बॉटम लास्ट विद नेगेटिव रन रेट ऑफ 0.4. तो आगे तो मैचेस होते रहेंगे. तो मुझे लग रहा है सौरभ, हम यहाँ से बात करते हैं. वी कैन क्विकली स्पेंड कि कैसा रहा इनका फर्स्ट 7-8 मैचेस, या 8-9 मैचेस जो बोल सकते हैं Yeah. फॉर ईच टीम. तो शुरू करते हैं पिछले बॉटम से. नंबर 10 दिल्ली कैपिटल्स. शॉकर सीजन हाँ. फॉर. Yeah, I think Delhi Capitals के लिए तो I mean it's very difficult to pinpoint where they actually went wrong. I mean they've fallen like a pack of cards in all the aspects rather. और थोड़ा सा I mean even though हमने जब टीम रिव्यू किया था and I know we have spoken about this in the past in the previous episodes as well, मेरे को हेजिटेंसी डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ पे ज्यादा थी क्योंकि डेविड वार्नर हैजंट बीन द सेम. पृथ्वी शॉ के ऑफ फील्ड टैंट्रम्स इफ आई माइट वांट टू कॉल, अभी एक रिसेंटली कुछ सुनने में आया है, एक और चीज सुनने में आई है. इट इज नॉट राइट नाउ डायरेक्टली लिंक्ड टू पृथ्वी शॉ, लेकिन जो एविडेंस या फिर जो भी केस बता रहे हैं, इट लुक्स लाइक यू कैन अटैच दैट पर्टिकुलर केस टू पृथ्वी शॉ. तो मे बी यू कैन टॉक अबाउट दैट लेटर. तो ये सब जो एंड यू नो इन अ T20 मैच ओपनिंग प्लेज अ पिवटल रोल. और इतने सारे मैचेस हो गए, नॉट अ गुड. आई डोंट नो इफ पृथ्वी शॉ प्लेड टुडे, आई डोंट थिंक सो ही प्लेड टुडे एज वेल. तो ओपनिंग अच्छी नहीं हो पा रही है. मिचेल मार्श आई नो, आई थिंक ही प्लेड फाइनली वेल टुडे and he played really well from with the bat and the ball. लेकिन जो स्टार प्लेयर्स थे from which we were expecting good performance, especially कुलदीप यादव, अक्षर पटेल ने अच्छी बॉलिंग की है, बैटिंग भी अच्छी उन्होंने अच्छी की है, लेकिन you just can't hinge on one or two players. तो डेविड वार्नर, पृथ्वी शॉ, to a certain extent Manish Pandey, क्योंकि I think he like for like he was almost कि I think श्रेयस अय्यर तो शायद कोलकाता में है, लेकिन Indian contingent में he was one of the strongest apart from Prithvi Shaw, one of the strongest batsmen that Delhi Capitals had. तो Delhi Capitals का apart from the star players not performing well, Indian contingent भी fire नहीं किया है. तो आई थिंक उनके लिए सारी चीजें hasn't worked. ऐसा नहीं है कि बैटिंग hasn't worked well और बॉलिंग hasn't worked well. सारी चीजें देखें तो उनकी hasn't just come together
इन 1 or 2 games. आई थिंक दो दो मैचेस जीते हैं, लेकिन मेजोरिटी ऑफ गेम्स वो हारे हैं. तो आई थिंक एक सबसे बड़ी ड्रॉबैक रही है कि फ्रॉम ऑल द प्लेयर्स बारिंग 1 or 2, there hasn't been any sort of consistency. Consistency सिर्फ दो प्लेयर से रही है. One on the good side, Akshar Patel. Second on the bad side, David Warner has been consistent, but on a bad side because his strike rate has been pathetic. So that बट hasn't helped Delhi डेविड वार्नर Capitals की as well. बात कर रहे हैं, डेविड वार्नर आज डकआउट पे आउट हुए। वो डकआउट पे आउट हुए. अच्छा अच्छा अच्छा, आज मैंने मैच नहीं देखा था. आज हाँ तो तो मुझे लग रहा था दिल्ली कैपिटल्स को. आई थिंक दिस मैच सम्स अप दिल्ली कैपिटल्स thoroughly. एक टाइम तक लग रहा था रिलायंट कि ऑन मिचेल मार्श। हाँ, और आज फिल सॉल्ट ने अच्छी बैटिंग की. आई सॉ हिज बैटिंग. आई थिंक वो भी एक थोड़े से डिसअपॉइंटमेंट रहे हैं फिल सॉल्ट. आई थिंक 2-3 मौके मिले हैं उनको पोस्ट पृथ्वी शॉज डिपार्चर. तो आज उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग. मुझे तो लग रहा था कि फिल सॉल्ट और मिचेल मार्श जैसी बैटिंग कर रहे थे एक टाइम पे. आई थिंक दे वर स्ट्राइकिंग एट 170-180 odds above consistently as far as the strike rate is concerned. मुझे लगा ये मैच तो खत्म. मतलब मुझे लगा SRH इज ओवर. और मैं शायद लग रहा था कि हम लोग कभी भी जब भी हम अपना एपिसोड करेंगे, मैं एसआरएच की ऑबिटरी लिखूंगा, क्योंकि ये हो गया था. अगर आज मैच एसआरएच हार जीत रहे हैं गया। तो हाँ लिखूंगा, मुझे लगा. तो लेकिन अब तो एसआरएच जीत गया. तो यार आई थिंक आज का मैच आप देख के पूरा अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली कैपिटल्स के लिए सीजन कैसा जा रहा है. थोड़े मैचेस जीतने चाहिए थे, जैसा आपने 1-2 मैचेस बताए ड्यूरिंग योर करेक्ट। वॉक थ्रू ऑफ द स्कोर बोर्ड्स, score of previous matches. तो आज का मैच देख लीजिए and you just can you can sum up Delhi Capital season up till now. करेक्ट। एंड आज पृथ्वी शॉ ने खेला नहीं है। हाँ, पृथ्वी ही शॉ नहीं डिडंट खेले, प्ले। राइट. सो मुझे लगता नहीं है कि अब, yeah, I mean they have what? Yeah, they'll play 14 matches. That's what I knew it. They only have 6 matches left. बहुत मुश्किल है प्लेऑफ्स आना. आई थिंक द सीजन इज ओवर फॉर देम. दे शुड नाउ स्टार्ट लुकिंग फॉरवर्ड नेक्स्ट सीजन. Yeah, आई थिंक डेविड वार्नर का टाइम हो गया. आई थिंक दिस इज इट. I He think may revive himself in the second half of the season. We'll see, but his time's coming to an end in IPL. मुझे तो लगता है अब ये इनका पूरे प्लेयर्स, पूरा डिपार्टमेंट. आई मीन मैं जब डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, उनकी कोचिंग स्टाफ वगैरह, आई थिंक अब उनका जो नेक्स्ट 6 मैचेस हैं, आई थिंक दे आर गोना प्ले टू कीप देयर प्लेस इन द नेक्स्ट कमिंग सीजन. Yeah. मुझे बस 2-3 ही प्लेयर्स लग रहे हैं श्योर शॉट. अक्षर पटेल, आनरिक नोकिया, जिन्होंने अच्छी बॉलिंग की है. आई थिंक 2-3 ही प्लेयर मुझे श्योर शॉट लग रहे हैं. उसके अलावा मुझे कोई नहीं लग रहा है कि यू कैन जस्ट राइट इट ऑन द वॉल्स एंड दे आर गोना बी इन नेक्स्ट Yeah, I सीजन don't think there is an प्लेइंग फॉर auction as दिल्ली well. कैपिटल्स. I could be wrong, but auction का हाँ, कुछ आई एम है नॉट नहीं रियली श्योर. हाँ हाँ हाँ. अभी, बिकॉज अभी मु- सभी हुआ ना रिसेंटली. तो बिग ऑक्शन नहीं होगा. अगर छोटा ऑक्शन होगा, इधर उधर प्लेयर्स के मूवमेंट में होगा, तो इंडियन कंटीजेंट दे कुड रिटायर. बट या दिस आई इज इट. थिंक आई थिंक एक पॉइंट मैं बस, आई थिंक आफ्टर दिस वी कैन जस्ट मूव ऑन टू एमआई. यप। Delhi Capitals, the brains behind Delhi Capitals, right? It's Saurav Ganguly. You have, I think, Shane Watson भी है उनके in some or the other capacity. सौरव गांगुली हैं, रिकी पॉन्टिंग हैं, प्रवीण आमरे हैं, अजीत अगरकर हैं. What are these guys doing? I mean, मैनेजमेंट क्या कर रहा है दिल्ली कैपिटल्स का? आई डू नॉट नो. आई मीन देखिए, एक और चीज है. आई मीन इट्स वेरी इजी टू ब्लेम दी स्टाफ. Eventually it's players who come, they turn up on the field and they have to give the performance. लेकिन उनका स्टाफ भी, इतने सारे मैचेस हो गए somewhere, you have to point fingers to the staff as well. And the staff is, ऐसा नहीं है कि मैं कोई नत्थु खैरे प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ. You're talking of a pedigree of players like Ponting and Ganguly and Shane Watson and Ajit Agarkar, Praveen Amre. I think उनके ऊपर भी काफी यू नो स्क्रूटनी होगी दिल्ली कैपिटल्स के ओनर्स की. तो देखते हैं क्या होता है. या एब्सोल्युटली. चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं मुंबई इंडियंस की. 7 पे हैं. 7 गेम और बाकी है. तो गेम लेफ्ट. 6 पॉइंट्स पे हैं. तो दे हैव लॉस्ट मोर देन दे हैव वन. 3 जीते 4 हारे हैं. चांस तो अभी भी है इनका. अगर आप देखोगे मुंबई इंडियंस का अभी भी है. चांस है. अर्जुन तेंदुलकर हैज कम इनटू द सीन दिस टाइम.
बट या एसेंशियली बोल सकते हैं कि it's not the Mumbai Indians of the past. It's no longer the champion team. Um, क्या क्या लग रहा है इसका? I mean, जोफ्रा आर्चर आ चुके हैं, but He some hasn't players been have playing. hasn't been Hmm. playing. Arjun Tendulkar has been a good addition there. Cameron Green has chipped in. Tilak Verma has done well, but they are where they were expecting. कोई सरप्राइज नहीं किया Right. नाइन्थ। राइट, आई थिंक जैसे हमने दिल्ली कैपिटल्स पे थोड़ी सी पेसिमिज्म दिखाई थी ड्यूरिंग आवर रिव्यू, इसमें भी मैंने बात की थी ईशान किशन और रोहित शर्मा की। एंड द प्रॉब्लम एग्जिस्ट, बीच में मुझे लगा कि शायद रोहित शर्मा या ईशान किशन थोड़े फॉर्म में आ गए हैं, लेकिन ईशान किशन की मुझे लगता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इफ द पिच इज नॉट फ्लैट, व्हेन आई से फ्लैट, इट हैज टू बी सुपर फ्लैट, आई थिंक ही स्ट्रगल्स। और मुझे ये इंटरनेशनल मैचेस में भी दिखा है, और ये अब आईपीएल में भी दिखने लग गया है, और उनकी थोड़ी सी वीकनेसेस हियर एंड देयर अगेंस्ट क्विक बॉलर्स, दैट थर्ड स्टंप फोर्थ स्टंप लाइन, ही लुकिंग टेंटेटिव। आई थिंक बॉलर्स हैव स्टार्टेड टू एक्सप्लॉइट। स्पिनर्स पे भी उतना कॉन्फिडेंट नहीं दिखते हैं मुझे, काफी नजिंग प्रॉडिंग काफी लगती है उनकी बैटिंग में। तो डीसी की तरह इनका भी एक ओपनिंग में एक सही रोहित शर्मा और ईशान किशन सही से बैटिंग नहीं कर पा रहे हैं, जो स्टार्ट मुंबई इंडियंस को चाहिए। आई थिंक दे आर नॉट एबल, दे बीन हैवंट बीन एबल टू प्रोवाइड। सूर्य हम्म। कुमार यादव, आई थिंक लेटली ही हैज स्टार्टेड टू प्ले लाइक सूर्य कुमार यादव, हालांकि आई थिंक दे वुड फर्दर वांट सूर्य कुमार यादव टू प्ले वेल। मुंबई इंडियंस के अभी भी चांसेस हैं, दे कैन स्नीक इन, आई कैन नॉट डिनाई दैट, लेकिन आई डू नॉट थिंक सो दे स्टैंड एनी चांस, and I can possibly stick my neck out and say that, against the likes of RR, against the likes of गुजरात टाइटंस और एलएसजी। चेन्नई के साथ हो भी सकता है, क्योंकि चेन्नई की भी, हालांकि चेन्नई इज डूइंग रिलेटिवली वेल, लेकिन चेन्नई की मुझे लगता है बॉलिंग थोड़ी सी वीक है। तो मुझे लगता है कि दे इवन माइट स्नीक इन, बट आई डोंट सी देम विनिंग दिस टूर्नामेंट। आई थिंक इट वुड बी अ मिरेकल ऑफ सम सॉर्ट्स। जोफ्रा आर्चर मुझे नहीं लग रहा है कि अब खेलने वाले हैं। आई थिंक ही इज नॉट गोइंग टू टेक एनी रिस्क कंसीडरिंग एशेज वगैरह आने वाला है, and he's made it clear that he's gonna make all the three formats a priority. तो मुझे नहीं लगता है कि इवन इफ दे माइट स्नीक इन द लास्ट, मुझे नहीं लगता है कि ये eventually करेक्ट। you will see Mumbai Indians lifting the trophy. मैंने मुंबई इंडियंस तो का वो ओपन करा है जहाँ पे उनके नेक्स्ट फिक्चर्स हैं। तो अभी उनके पास है, they're going to play Punjab, they're going to play Chennai, which is going to be a tough one. They're playing RCB. They have Gujarat Titans to play again, LSG to play again, and then Sunrisers to play again. They are ending with Gujarat, LSG, and Sunrisers. Yeah, that's a very very tough one for them. I मुझे लग रहा है कि अब मतलब they need like पूरा opposite होना चाहिए सीजन from what they had before, where they win more, they lose less. Uh, Take some of these top teams out. आई आई थिंक एक तो है कि रोहित शर्मा को फॉर्म में आना पड़ेगा, एंड इफ देयर Correct. बैटर्स परफॉर्म वेल, आई थिंक सी मुझे बेस्ट केस सिनेरियो लगता है मुंबई इंडियंस के लिए, दे हैव टू बैट सेकंड and Hmm. they have to restrict the opposition team to, let's say, around 170, 180 at the Hmm. worst. I think then they kind of stand a chance. मुझे लगता है अगर रोहित शर्मा थोड़ी सी बैटिंग कर लें, सूर्य कुमार यादव, कैमरन ग्रीन is playing relatively well, टिम डेविड अपनी थोड़ी सी बैटिंग कर ले, मुझे नहीं लग, पता नहीं अब ये डेवॉल ब्रेविस और एक और जो साउथ अफ्रीकन प्लेयर है, आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट हिज नेम, उनको कब चांस मिलेगा। मुझे लग रहा है कि शायद हो सकता है कि डेवॉल ब्रेविस खेले टिम डेविड की जगह एक आध मैचेस। अर्जुन तेंदुलकर हैज प्लेड वेल, रिलेटिवली वेल। एक मैच उनका बहुत बुरा गया था, which would have possibly given nightmares to the entire Tendulkar family. 31 runs पड़े थे उनको एक ओवर में। I'm not really sure who the batter was. I think it was one of those Indian batsmen who kind of took Hmm. him apart. या तो हाँ, तो बट देखा जाए तो उन्होंने बॉलिंग अच्छी की है। आई थिंक थोड़े बॉलर्स, जो पुराने बॉलर्स, उन्होंने बोला है कि अगर थोड़ी स्पीड अगर बढ़ा लेते हैं, मुझे लगता है उनके स्पीड पे थोड़ा फोकस कर सकते हैं। आई थिंक बॉलिंग रिलेटिवली मीडियम पेसिश, तो अगर थोड़ा सा स्पीड पे फोकस करें, मुझे आई थिंक, मैंने उनकी थोड़ी बैटिंग भी देखी थी लास्ट मैच में, ही लुक गुड, ही लुक्ड फाइन।
तो हो सकता है कि इनको थोड़ा एक्सटेंडेड रन मिले मुंबई इंडियंस के लिए फाइनली। मुझे लगता है इट वाज ड्यू। हम्म। आई डोंट थिंक सो दिस इज अ केस ऑफ नेपोटिज्म लाइक फ्यू ऑफ द ट्विटराइट्स हैव बीन कॉलिंग। हालांकि बहुत कम लोगों ने बोला है, लेकिन आई थिंक इट वाज ड्यू। आई मीन 3-4 साल से मुंबई इंडियंस के सेटअप में थे, करेक्ट। इतने आई सारे डोंट लोगों को आई चांस डोंट नहीं एग्री दैट इट मिला। इज नेपोटिज्म एक्ट। अगर नेपोटिज्म होता तो ये 4 साल पहले से खेलना शुरू कर देते ऑन हिज वेरी फर्स्ट एंट्री इनटू मुंबई इंडियंस। राइट 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 राइट। Piyush Chawla was a very good surprise. I don't want to spend too much time on Yeah, this, but that was a very welcome change that he's a veteran now. पहले youngster थे अब veteran में आ गए. He's impressed. I think yeah, beyond. So there it is. Chance है but लगता नहीं है कि top 4 crack कर पाएंगे. But yeah. yeah, we'll see how it goes. तो नंबर 8 की बात करते हैं. नंबर 8 है सनराइजर्स, जो अगर आप देखोगे पिछले 3 मैच हार चुके थे, लग रहा था कि इनका सीजन खत्म हो गया है, एंड दे वन अगेन टुडे. एंड इफ यू लुक एट द सनराइजर्स नेक्स्ट सेट ऑफ गेम्स लेफ्ट, दे हैव विद केकेआर, दे हैव वन गेम विद आरआर, उसके बाद एलएसजी, उसके बाद गुजरात टाइटंस, उसके बाद आरसीबी, and then they landed with MI. Not going to be easy run at all, but they need consistency. And I think for me, they at 8 has been a big surprise and a big disappointment. I was hoping with the kind of squad they have built in, bowling or balance जो आ गया था, for some strange reason it has not translated as expected as it was planning, as we Absolutely. expected Hmm. it. Um, Hmm. bit disappointed overall. Generally, I mean, I will not pinpoint anyone here because there is no specific to pinpoint. Brook ने सेंचुरी मारा, he was not consistent. हैंनरी क्लासेट ने आज जिताया, he was not consistent. मयंक अग्रवाल ने एक इनिंग्स मारा, he was not consistent afterwards. Abhishek Sharma batting one innings, he's not been consistent. It's been the trend that they all had flashes of brilliance, but they have not been consistent. And the Right. result is they are at 8th. With 8 matches Right. are played, Right. 6 matches to go. They are actually not in the good spot. And I think the first time I predicted them to be in the final four, even final two. I think my predictions are going to come wrong here with the way these guys have performed. आई थिंक आज वो मैच जीत गया। हालांकि मुझे एक दो बार लगा कि शायद सनराइजर्स, जैसे मैंने पहले भी बोला कि मुझे लग रहा था कि हार जाएंगे। आई थिंक एट वन मोमेंट दे वर 100 for 4. आई थिंक इट वाज Correct. क्लासन and the guy who kind of played well to bail them out of the tricky situation. Correct. आई थिंक जैसा आपने बोला, आई थिंक वो कंसिस्टेंटली इनकंसिस्टेंट फ्लैशेस ऑफ ब्रिलियंस दिखाए हैं। लास्ट 2-3 मैचेस में क्लासन ने थोड़ी बैटिंग अच्छी की है, लेकिन वो ही हैजंट कंप्लीटेड व्हाट ही इज सपोज्ड टू डू। जैसे उन्होंने 30 रन मारे 15 बॉल पे, 32 रन मारे 18 बॉल पे, लेकिन Correct. दे काइंड ऑफ नीडेड फॉर हिम टू गो ऑन टू मेक अ गुड 50 और अ 60। दैट डिडंट हैपन। हैरी ब्रूक आई थिंक, और माकरम भी, I think these are the most two talented players in the world scene. One of the two. I think Harry Brook तो आप बोल सकते हैं. Maybe you can, if you want to give a number one बोल सकते हैं. Makram is maybe on par with Shubman Gills. हालांकि माकरम को थोड़ा टाइम हो गया इंटरनेशनल सीन में आए हुए. I think they both have been little. As far as the foreign contingent is concerned, I think Indian contingent भी बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट रहा है, स्पेशली राहुल त्रिपाठी। आई थिंक वो तो आज शायद खेले भी नहीं थे, जैसा मुझे लग रहा है आज। आज तो खेले थे आज, I आई डोंट नो, कैन यू think जस्ट। he was there, scored हाँ, 10 ही वाज runs. देयर। So हाँ, तो practically वही non-existent. राहुल तो राहुल त्रिपाठी ने भी एक दो मैचेस अच्छे खेले। आई थिंक यही वो जो हैरी ब्रुक, देन योर माकरम, वो जो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं आ पाया। अब तो आप बोल मतलब आई एम हेजिटेंट, क्योंकि क्रिकेट इज अ गेम ऑफ अनसर्टेनिटीज एज दे से। लेकिन आप सनसेट हैदराबाद लिख सकते हैं इंस्टेड ऑफ सनराइजर्स हैदराबाद। Yeah, it's such a disappointment for me because I really wanted them to win यार. मतलब लग रहा था कि they had finally assembled a good team, but um, yeah, they have to go back to the drawing board. They have to win all 6 games to stand a chance. And even राइट then, I राइट। think right now, even then, if they do that, they will be still, having the outside chance because third or fourth पाएंगे. They have done this before.
पहले करा हुआ है, where Warner was the captain, they won 7 in a row, and they went to the the playoffs and everything. It's not that they have not done it before, but the odds are against them now. They just need an absolutely blinder of a second season to go through. I think it's. I think if I just compare Hyderabad to Mumbai Indians and Delhi Capitals, I think especially Mumbai Indians, because Mumbai Indians को हम थोड़ा chance दे रहे हैं, which is not the case with DC. SRH के पास players हैं, unlike Mumbai Indians. Mumbai Indians के पास they don't have the bowling at all. They're just Correct. kind of depending on Piyush Chawla. I think they have the arsenal. It's just that they're not firing. They are not firing. That's the thing. They have the players. They have the. सब कुछ सही है. They have just not done it. But they're not playing to They're the not just. potential. They're not playing to the consistency. If they're consistent for the next 6 games, they have a chance. If they're not, yeah, they're not gonna have. Yeah, on the only reason मुंबई को थोड़ा slightly ज्यादा दे रहे हैं, मुंबई ने कभी एक गेम लेस खेला है. They have at the हाँ, same वो भी है. points. वो भी है. वो भी है. Right. Mumbai can get to 8 points very quickly for the same game, and they're above Hyderabad and even above, probably above Punjab because of the better run rate if they win it. So, which is why I'm saying कि Mumbai still has a chance if they play well, but Hyderabad has to play well to get a chance. I mean, Has they to play have to well. win. I think they were extremely lucky to win today. मेरे को जैसे मैंने पूरा मैच नहीं I देखा would है. say yes. I would say yeah, and I think and they need the luck. See, sometimes ना IPL ऐसे You टूर्नामेंट्स में need luck भी चाहिए होता है आपको. absolutely, और ये absolutely right. इधर एक ओवर इधर एक ओवर उधर एक एक पलना भारी हो जाना बोलते हैं. They need this, so they probably have to do a I, एक वो run बनाना है. 3 मैच हार गए हैं. They need to win 3 in a row to bring that confidence back. So that I think would I have think we can then talk about it, see if they have a chance if they win 3 in a row. I think the key is Harry Brook and Markram. I think इन दोनों में से एक को I think they have to take up the responsibility for sure. Harry Brook will be better मेरे हिसाब से, क्योंकि मार्करम मुझे लगता है कि इतने बैड पैच में नहीं है, लेकिन मुझे हैरी ब्रूक पे थोड़ा सा लग रहा है. I Yep, think he has to come up well. absolutely. All right, we'll talk next. Seventh spot में है कोलकाता. अभी 9 मैचेस खेल चुके हैं. They are still at 6 points. So another terrible season in the making for them. They have lost And 4 matches in the last 5 games. The only game they won hmm, was RCB. मतलब ये भी मतलब okay, that was also okay, relatively close. 20 रन से हार गए थे. Not surprising at all. Actually, it is surprising कि वो 10th नहीं है, 7th है, and they're better than Delhi. right. I can't blame them. Shreyas Iyer was such a big miss for them, but they have done. I would say मेरे हिसाब से मैं 10th expect कर रहा था. They are exceeding expectation here. They'll come above Delhi with the way they have played. Venkatesh Iyer, Nitish Rana, one of the stars of this season. Rinku Singh. So मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं. They only have 5 games left आगे जाके. Yeah. एंड अगर आप 5 गेम्स भी देखोगे, यू हैव विद केकेआर, पंजाब, आरआर, सीएसके एंड एलएसजी. दोज आर टफ गेम्स. एलएसजी है, आरआर है. पंजाब कैन बी हिट एंड मिस, एसआरएच कैन बी हिट एंड मिस, एसआरएच डजंट विन. सो दे हैव अपॉर्चुनिटी इन विनिंग फ्यू हियर, बट थोड़ा ज्यादा ही अपने आप को हो गया है. 6 पॉइंट्स पे ही है अभी. 8 या 10 पे होते तो शायद आई वुड गिव देम अ मच मोर चांस. But I think, yeah, with no Shreyas Iyer, I think they should be happy the fact that they'll not come last, which I think could still happen. मेरे हिसाब से हो सकता है if Delhi starts to win something, but मुझे ये drop below और जाएंगे in the table. Yeah, I think you rightly said it. I mean, मैं कोलकाता नाइट राइडर्स को एक्सपेक्ट कर रहा था कि और नीचे हो सकते हैं. I think they've kind of punch above their waist, as they say. So I think जैसे I don't know. I mean, back in US, if you've heard it, if RCB is known as KGF, I hope you know what KGF means. So you know what does KKR stand for? It stands for RRR. You know what does RR mean? Just a question. नहीं, It's क्या है? Rinku Rana Russell. Oh, the triple R. ट्रिपल आर. सो रिंकू राणा ने तो मैं बोलूंगा
बहुत ही अच्छी बैटिंग की है. I mean, you They have can't done it. take away the credit. I think Rinku has been the star boy for IPL this Find time around. I find think of the season. find Find of the find season. find. वो बोल सकते हैं ब्रेक थ्रू टैलेंट, जैसे हमने 2 साल पहले हाँ वेंकटेश अय्यर का नाम हाँ सुना था, हर्षल पटेल का नाम हाँ. सुना था. वील रिमेंबर विंकू सिंह दिस ईयर. And मुझे तो लगता है everyone is going to remember that 5 6s फाइव that he सिक्सेस. basically had. I think Russell has been disappointing. I think their opening, I know, I think it is Jagdishan and Jagdish. Rahmulla Gurbaz. Finally, Gurbaz have done well. Yeah. So एक और चीज है, Gurbaz finally has done well. Roy did well in the last couple of matches. Lekin again, I think in one of the matches he scored a good 50, 60, with a good strike rate. But the team, eventually didn't close the match properly. As in they didn't score enough number of runs. Bowling, मुझे apart from batting, which I think have done relatively better, Hmm. मुझे लगता है इनकी bowling थोड़ी weak है. I think राणा, रिंकू, जगदीशन भी मुझे एक थोड़ा सा वीक स्पॉट लग रहे हैं, लेकिन आई थिंक रॉय और गुरबाज हैव डन देयर बिट, स्पेशली गुरबाज इन टुडेज मैच. आई थिंक ही लुक्ड ब्रिलियंट टुडे. और एक और चीज लगता है आज का मैच केकेआर शुड हैव स्कोर्ड अ लिटिल बिट मोर. आई थिंक 15 ओवर में दे वर अराउंड 180. 5 ओवर्स दे जस्ट स्कोर्ड 30 40 रन्स. जस्ट नॉट इनफ. दे शुड हैव स्कोर्ड 200 रन्स फॉर श्योर. और एक टाइम पे तो आज के मैच में द गुजरात टाइटंस वर इन स्पॉट ऑफ बॉदर. आई थिंक 92 फॉर 3 थे एक टाइम पे. रन रिक्वायर्ड वाज पर ओवर वाज अराउंड 11 12. But again, Miller and surprisingly, I Jay forgot this Shankar. guy's name, Vijay Shankar. I think this is the second knock that he's played, a blinder He's of a done well. knock. Gujarat is impressing. We'll talk Gujarat anyway for a minute. Later. So I think KKR के chances is as bleak as Mumbai Indians. Better than DC. मैं तो But सोच रहा हूँ डीसी ऐसा ही हाल है इनका तो. 5 ही गेम बाकी है अभी. 6 पॉइंट पे ही है. अच्छा हाँ, तो ये 9 मैचेस भी हो चुके हैं. 9 I मैचेस हो think गए हैं. They are as bad as हाँ. Delhi Capitals. If the Delhi Capitals wins one more game, they will be at par with Kolkata Knight Riders. So आई थिंक वही है. मुझे लग रहा है इनकी बॉलिंग थोड़ी वीक है. मुझे इनकी बॉलिंग, नरेन इज नॉट द नरेन दैट ही वाज. ही कैन स्टिल रिस्ट्रिक्ट द बॉलिंग वीक है, बैट्समैन. और the squad hasn't squad balance नहीं है. बैलेंस 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 You know there are flashes of brilliance from Iyer, Rana, Rinku, on an odd day, Ramla Gurbaz or Jason Roy, but same issue as Sunrisers Hyderabad. I think trend वही दिख रहा है कि if you're not consistent, or even if you have a balance, or if you don't need good players, you need balanced team to win IPL. Or we'll एब्सोल्युटली. talk about Gujarat, and Gujarat is that epitome of, you don't need superstars, you just need 1 or 2 superstars, but if you have a good balance, you can do wonders. And Kolkata, to some extent, Sunrisers, all of these are examples of why balance is critical in a team. And I think it's evident there. So या आई थिंक आपको क्या लगता है, आई मीन अगर उनको एक जड़ी बूटी, कोलकाता को एक जड़ी बूटी मिल जाए कि अगर जैसे रिंकू सिंह हैज कम आउट सेइंग दैट कि शाहरुख खान उनके शादी में नाचेंगे after that innings. What if Shah Rukh Khan comes and says that in each and every to each and every player, I think most majority of the players are not married, I'll barring Russ. I'll be a blunt sort of. ये लोग ने No dance is going to save them. no dance, nothing is going to save them. I'll tell you why. Practical answer दे रहा हूँ. 9 मैच पे 6 पॉइंट है. चलो रिंकू सिंह ने 5 इनिंग्स में 5 छक्के 5 बार मारे, और शाहरुख खान 5 बार डांस भी कराया. They're gonna reach what? 16 points. आईपीएल में 16 पॉइंट्स में आप बॉर्डर लाइन पे आओगे, और आपके ऊपर और 5 टीम हैं. They're going to depend on others. सिर्फ 3 मैचेस में 16 पॉइंट्स पहुंच जाएंगे, एंड दे हैव टू प्ले 8 गेम्स. तो उनको उतना बुरा खेलना है जितना पंजाब कोलकाता को उतना अच्छा नाच वाला परफॉर्मेंस करना है. Tall order. They have to It's have difficult. 4 to 5 teams having bad second half. So तो शाहरुख खान का I नाच भी think, नहीं बचा पाएगा. शाहरुख खान का नाच भी नहीं बचा पाएगा. They should be happy that they are not coming 10th. I don't think they are 10th material now, but they are in Right. the bottom half.
and that is where I leave them at. Yeah. So next team was Punjab Kings. 6th spot पे हैं, 8 मैचेस में 4 हारे 4 जीते, एकदम बैलेंस खेल रहे हैं, एक मैच हारते हैं, एक मैच जीतते हैं, एक मैच हार रहे हैं, एक मैच जीत रहे हैं. दैट्स बीन देयर ट्रेंड ऑफ द लास्ट 5 मैचेस. It's been LWL in the this thing. Shikhar Dhawan is still around. Shikhar Dhawan is still doing Shikhar Dhawan things. और अगर अगर आप देखोगे पंजाब का नेक्स्ट मैचेस, दे हैव 8 games, so they have good amount of games to be played. Have to play CSK again, MI, you know, KKR, DC के साथ 2 games हैं. Wow. They have good run there. They don't play Gujarat Titans anymore. They don't play Sunrisers anymore. They have to play DC. They have to play KKR. They have to play MI. So the run is very nicely poised for them. They're not playing LSG. They're not playing GT. Tough games निकल गए हैं. Actually, they have surprised me. I was not expecting Punjab to do this. Even if you look at the last game when they, LSG scored 257. Atharva Taide has been a good, interesting, find for them in terms of some sort of consistent performance. Sam Curran hasn't done wonders yet for the kind of price they've paid, but if you look at it, he's done okay. Rabada is still there. Lam Livingston आए हुए हैं. They have chance. The run is nicely poised. They don't play the top 2. They don't play Gujarat. They don't play LSG. The top 3 में Gujarat और LSG को नहीं खेल रहे हैं. They just have to beat Delhi twice, and they have Mumbai Indians and KKR. So they're playing at the bottom half of the team. So अगर momentum बना, they do well. Even if they win, 6 out of the 8 next 8, they're going to be at 20 points. IPL में historically 16 and above, you're in a good spot. 18 means you're there. They need to win 5 out of next 8, and the kind of run they're in, they have a chance, which is surprising for me, because I did not think they would get a chance when I started the review before the season. Right. I think one of the teams which has surprised, as you said. So what is working for the team and what's not working? I think the last match I'm not really sure if it's going to deflate them. I think 257. I don't know if you got a chance to look at it. Every over seemed like a highlight. मतलब the innings seemed like a highlight. मतलब इतने सारे चौके छक्के, और I think किसके साथ हुआ था ये मैच, मैं भूल गया. LSG, I will put the score LSG. here. Yeah, LSG, right. यार हर कोई आके, आई थिंक एक मीम बन गया था इंस्टाग्राम में, मैं देख रहा था, इफ राहुल वाज नॉट अराउंड दे वुड हैव स्कोर्ड 280. तो curious chaos of KL Rahul. Yeah, which मतलब एक और मीम था जहाँ पे they were showing all the batsmen of LSG as muscular guys, and Mr. Rahul was shown as a obese sort of a guy. So you can just imagine the plight of KL Rahul. That's the only thing which is not clicking right now, maybe for LSG. चलो LSG के बारे में बात करते, we'll talk. हाँ, right. So Punjab has been surprising. I think they have a chance. I think you did a fantastic job, at least for me, what is concerned, कि आपने बताया कि इनके next matches क्या हैं. नहीं तो मैं outrightly बता देता कि इनके chances कम हैं. At least in the top 4. मुझे लगता है ये top 4 में आ सकते हैं. जैसे आपने मुझे आ सकते हैं. लेकिन I don't think so. They don't have what's required to beat the likes of LSG. Even maybe CSK. I think the rest of the top 3 that we are expecting, RR, LSG, and GT, I don't think they can beat them. Top 4, considering the matches they're going to play against, they have a fair chance. लेकिन इनकी bowling बहुत ही weak है. इनकी bowling barring Rahul Chahar, I think, who has consistently, I won't say he's picked up wickets, but made sure he's not going for a lot of runs. मुझे उनकी और बॉलिंग पे सैम करन भी एक बॉलर है, मतलब वो कभी नहीं बोलूंगा, कंसिस्टेंटली ही इज मेड श्योर ही अगेन डजंट गो फॉर रन, बट एज अ यूनिट उनकी बॉलिंग मुझे थोड़ी सी वीक लगती है.
और बैटिंग में लिविंगस्टन आए हैं, बट लिविंगस्टन हैज कम आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक. शाहरुख खान हैज प्लेड डिसेंटली वेल. तो मुझे लगता है थोड़ा सा मुझे एक बार इनको चेक करना पड़ेगा कि थोड़े बैट्समैन कहाँ पे खेले. जैसे मुझे लगता है जैसे लिविंगस्टोन, I think Punjab scored 200 runs in the last match was when they were chasing 258. They should have shuffled their batting. Shahrukh Khan Right. ऊपर, Livingston ऊपर, Sikandar Raza, there was no point, him coming at 3 or 4. Hmm. तो थोड़े से डायनेमिक चेंजेस मुझे लगता है पंजाब को थोड़े करने पड़ेंगे. लेकिन या आई थिंक जैसा आपने बताया, आई थिंक दे हैव few easier matches if I can say to come. मुझे लगता है कि they have a decent run to qualify actually. अगर नहीं, हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, अगर आप देखोगे दे हैव अपॉर्चुनिटी टू बीट एमआई. नेक्स्ट गेम सीएसके, चलो एक्सपेक्ट करते हैं कि सीएसके के साथ हार जाएंगे, सीएसके इज गुड, यू नो डूइंग वेल. एमआई, केकेआर, डीसी के दोनों बार, इफ दे बीट ऑल फोर, they're getting 8 points. They're getting 8 points. They'll be at 16 points. They're gonna I be think at 4-5. They're gonna push for that number 4 spot. उनका ये एक प्रॉब्लम है, अभी हम बात करेंगे आगे टॉप 5 टीम्स का. दे हैव अ बैड रन नेट रन रेट, so they have to win well somewhere. Like उनका वो नेट रन रेट अगर इंप्रूव कर पाएंगे, at 16 points of IPL, traditionally IPL में you are in that playoff zone. You're competing for it, you're pushing for it, you may even qualify, other teams don't do it well. तो आई थिंक उनके yeah. लिए पाथ थोड़ा क्लियर है, एजेंडा क्लियर है. दे हैव टू विन अगेंस्ट दीज लोअर रैंक टीम्स एंड विन बिग, and if they can spring a surprise against CSK or RR, boy, they are overshooting by a mile. मतलब उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि the kind of squad they had कि they would get in the top 5, top 4. So yeah, I think we'll leave Punjab there कि let's keep an eye on them. मुझे लग रहा है कि they could be a surprise package second half of the season if they get their act right, and then see what they do there. So just one thing before we move to RCB. So KKR has Shahrukh Khan, so Punjab Kings has Preeti Zinta. तो Ah, प्रीति जिंटा को क्या करना पड़ेगा? आई थिंक उन्होंने कुछ बोला था कि उन्होंने कुछ पराठे वराठे बनाए थे, लेकिन आई एम नॉट रियली श्योर विद रिस्पेक्ट टू व्हाट. तो प्रीति जिंटा को क्या करना पड़ेगा? वो सरप्राइजिंगली वीर ज़ारा आर 8th I and 7th, know. 6th and Please 6th, Zara 6th and 6th and 7th. 7th. Uh, प्रीति जिंटा को नाचना पड़ेगा और वही पराठे खिलाने पड़ेंगे अपने. शी इज नाउ अ रेसिडेंट ऑफ कैलिफोर्निया एंड लॉस एंजलिस, तो उसको हॉलीवुड uh, स्टाइल पराठे बनाने पड़ेंगे टू ब्रिंग इट टू द पंजाब क्राउड. right. And yeah, and have Mohali has to be behind them to get this victory for them. All right, next बात करते हैं किंग कोहली, Faf du Plessis, Bangad and Co. They are Hmm. on top 5. Now हम बात कर रहा हूँ, we are getting into the big leagues. 8 matches, won 4, lost 4, negative run of 0.139. They surprisingly won last 2 and then they lost the last game. So if you look at that, this thing, KKR के साथ हार गए थे, but they bet Royals before. They bet they lost to CSK and then they bet Capitals. वही है, lower teams को हरा रहे हैं. Surprising they lost to KKR. I think that's going to sting them a lot. I think in the grand scheme of things, अगर आप उनका run up देखेंगे for the next second half of the season, they have to play LSG, they have to play DC, they have to play MI, they have to play RR, they have to play SRH, and they have to play Really GT. nice. So they are still playing top guns yet. LSG के साथ खेलेंगे, GT के साथ खेलेंगे, RR के साथ खेलेंगे. They are not having with Delhi Capitals है, but they're not having many with. Generally, they are balanced there, but it's not an easy run like Punjab. So being at the same spot as Punjab actually has a better chance to leapfrog over them if from the same set of fixtures. Yeah, so I think it's tough to call a little bit about कि ये कैसे कर पाएंगे, because they are also been a little bit inconsistent for me in terms of how they have done their batting and everything. Virat Kohli has done well, but his
Virat Kohli IPL में he's not a superstar. He's a very very good player, but he's not that guy who's gonna win matches for you. He's gonna help you rotate. He's gonna help you guide it through and all that. Faf hasn't clicked as much as we have expected. Glenn Maxwell has been little bit inconsistent. एक मैच में खेलेंगे जीतेंगे, but he'll get out. They're kind of relying on him a lot. So and then the bowling hasn't been that. मतलब डेविड विली आए हुए हैं, वनिंदु हसरंगा खेल रहे हैं. Doesn't feel it. No, लगता नहीं है कि ये top 3 top 4 वाली टीम है. If they do well, they could push for fourth. ऐसा नहीं है कि नहीं है चांस, but लगता है नहीं है कि ये क्वालिफाई करके भी आगे जा पाएंगे as such. हाँ, आई थिंक ये ओवर रिलायंट ऑन केजीएफ. आई थिंक केजीएफ कोहली, आई थिंक जैसा आपने सही बोला कोहली के बारे में, आई थिंक इट्स गुड दैट यू आर नॉट इन इंडिया, एल्स यू वुड हैव बीन ग्रीटेड विद rotten eggs and tomatoes a day after. But you're right in your assessment of Kohli. मुझे 130 140 का उनका स्ट्राइक रेट रहता है. ही इज अ गुड पार्टनर टू गुड फिडल टू फाफ. फाफ का हालांकि ही आई थिंक ऑरेंज कैप होल्डर हैं बाय अ माइल. आई थिंक उनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा रहा है. मुझे लगता है वो बस थोड़े क्रूशल टाइम पे आउट हो जाते हैं कभी कभी. He plays well and he gets out. He जैसे I think एक मैच था, I think he started very well and then he got out. I think लास्ट ही मैच था जैसे जो हारे थे आरसीबी. मुझे लगता है आरसीबी के लिए सबसे की प्लेयर हैं फाफ और मैक्सवेल इन टर्म्स ऑफ बैटिंग. इट्स नॉट कोहली. वेरी वेरी ऑनेस्ट फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम. आई थिंक कोहली's T20 best days of his T20 career are a pass by. I know he played a magnificent knock against Pakistan, but मुझे ऐसा लगता है. आई थिंक वो 130 Yeah, 140 वाले स्ट्राइक. Kohli is not the. Yeah, again, I'll anger the Indian fans here. He is the greatest Indian player since Tendulkar, but he is a pure cricketer player. मतलब वो Test cricket, one day, the true cricket player है वो. He is not this T20, bam bam bang वाले player. It's too हाँ classy for T20. वो या आई थिंक वो 130 140 वाला वो खेल लेंगे. उसके ऊपर जाने में you might see one out of 10 innings जहाँ पे 150 160 Correct, की which is स्ट्राइक why रेट I'm है. saying this is not his true game. This is not his true play. I, and I and I think and I think that's where I've been a little surprised with Faf. मैं फाफ को 10 साल से देख रहा हूँ since the time he's made his debut. I think last 3 years and since the time he's actually quit playing for South Africa, he's been a revelation. I mean revelation. I think वो strike rate उनका last जैसा अगर आपको याद हो सीएसके में भी जब खेल रहे थे अंडर धोनी, he played very very well with I think शेन वॉटसन के साथ. कभी कभी उन्होंने शायद Correct. उन्होंने या शेन वॉटसन या ऋतुराज गायकवाड़ के साथ भी उन्होंने ओपनिंग की है. बहुत ही सिग्निफिकेंट और अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप थी वहां सीएसके में भी, और यहाँ पे भी अच्छी बैटिंग कर रहे. तो जैसे फाफ ने अपने गेम को थोड़ा सा चेंज किया है, आई थिंक कोहली वैसा नहीं कर पाए इन T20. आई एम नॉट सेइंग ही डजंट हैव ऑल द शॉट्स, ही पॉसिबली हैज ऑल द शॉट्स, लेकिन थोड़ा सा एक रीइन्वेंशन इन द T20 व्हिच इज रिक्वायर्ड. द लैप, द पैडल जो खेलते हैं. Have you, I mean, leaves laps and paddles. I haven't seen Kohli playing a sweep shot. He hardly plays a sweep shot in international matches as well. तो मुझे लगता Correct. है कोहली, I mean, let's not talk next about Kohli. मुझे लगता है कोहली is a very good fiddle to Faf, लेकिन मुझे लगता है Faf और Maxwell पे बहुत ही ज्यादा ओवर रिलायंस है in terms of their batting. If they are batting first, they have to rely on both of them to make sure they cross 180 190 sort of a total. They need और to. they need to considering their bowling, क्योंकि उनकी बॉलिंग इतनी It's वीक not a है, world class bowling. Yeah. तो आपको 20 30 रन का बफर चाहिए. तो और वनिंदु हसरंगा इज नॉट लुकिंग द सेम. ही इज लीकिंग रन्स. हालांकि लास्ट गेम में इज डन वेल दो, 4 ओवर में 2 विकेट्स लिए हैं, बट वही है, कंसिस्टेंट. दे आर नॉट कंसिस्टेंट एनीमोर. They are हाँ वही. surprisingly inconsistent. I think the biggest disappointment is Harshal Patel Yeah, you can say that. for the kind You know of something. impact he did for them year to back. You know something that's very very surprising. It's been the case with RR for a long time, and we can possibly close on that. After they have KGF,
which possibly is the one of the best trios that any team has. And I think they have the best quick bowler right now in IPL, which is Mohammad Siraj. He's quickly becoming that Mitchell Stark sort of a bowler, where Mitchell Stark is famously known for picking up the wicket on the very first over. सपोर्ट नहीं है He's ना. bowled really well. He's bowled really well. I think I haven't rated in the past Mohammad Siraj very highly. टेस्ट मैचेस में भी मैंने उनकी बॉलिंग को क्लोजली फॉलो किया है. ही इज इंप्रूविंग. ही इज नॉट दैट 150 टेयर अवे फास्ट बॉलर. आई थिंक 130 140 के बीच में कंसिस्टेंटली रहते हैं, लेकिन ही हिट्स द हार्ड लेंथ और उन्होंने काफी अच्छी बॉलिंग की. आई थिंक यू कैन, आई डोंट नो इफ यू हैव एनी अदर नेम इन योर माइंड. Among the fast bowlers, he's the best right now in IPL in this season for sure. So they have They five have, but top quality, correct. 4 top quality players, and still doubts that Wait, they can come even in the top 4. Kind the of talks about the I overall structure stands of the team. I say again, they don't have balance. सिराज Balance the बहुत overall बहुत structure. अच्छा बॉलिंग कर रहे हैं, बट उसके सपोर्ट नहीं है. हर्षल is not I able to think support. I think Vikas Kumar Vashak is new. He will take wickets with really runs. yeah, Shabazz yeah, Ahmed is no longer as effective as he was before. yeah, Manindo yeah. Hasaranga is consistent. तो वही इश्यूज जो वही हम बात कर रहे हैं, they are persisting for them, and उनका जो रन इन है, it's not that easy unlike Punjab. I actually think Punjab has a better chance of qualifying than Rajasthan Royals. I think I know we're going to speak about CSK now. I think Chennai, RCB, and Punjab might battle out for the fourth. मुझे ऐसा Correct. लग रहा है. Yeah. And as I speak right now, I think it's Chennai's thing to lose, and it's Punjab's thing to gain as of now. I still think RCB will not qualify. They could surprise me, as you said. KGF ने कमाल दिखाया. You never know. They need the KGF group, Kohli, Glenn, and Faf to get this. चलो हम टॉप 4 की बात करते हैं. द करंट टॉप 4 वी हैव. द नंबर 4 पे अभी हैं चेन्नई सुपर किंग्स, who won 3 in a row, and then they lost the last game against Royals. So they Right. bet KKR, they bet Sunrisers, they bet RCB. So again, lower teams. They lost to Royals again. So the Royals have bet them twice so far already. And they lost to Titans. So एक वो ट्रेंड दिख रहा है कि धोनी is there, but Dhoni is not able to match the wits of the top team here. If you look at the run-in, जो अभी बचा है games, the remaining games they have, they are actually played 8, but they have got 10 points already. So technically, 4 games won from now, they are in a good spot to qualify. 4 out of the next 8, even if they win, I think they're a good spot there. If you look at it, रन actually easy लग रहा है मुझे. पंजाब के साथ खेल रहे हैं नेक्स्ट गेम. उसके बाद LSG is going to be a tough game. They're playing MI, they're playing DC, they're playing KKR, they're playing DC again. They're not playing Gujarat, they're not playing Royals, they're not playing Sunrisers. They're playing lower ranked teams. Another case of where their fixer run-in is so friendly. And if you have Dhoni and Devon Conway and the current team which they have today for them, Moin Ali and Deepak Chahar, Ambati Rayudu, DC को 2 बार हराना, KKR को एक और बार हराना, MI को हराना. Suddenly you are looking. I look at that run. They are favorites to win against Punjab. We'll see. We'll see how that goes. But I can say that they could win against Mumbai Indians को हरा सकते हैं, DC को दोनों बार हरा सकते हैं, and then KKR को हरा सकते हैं. That's your 8 points there. They're going to be the 18 points. They qualify. So Dhoni's magic is still there, despite the fact that I knew that Chennai Super Kings would be in the top 4, top 5, and they proved me right. मुझे लग रहा था कि 4th spot पे ही है जब हमने review किया था, and they have worked it according to the plan. Nothing flashy, nothing over the top here. I knew they were not in the top 3 material. The Dhoni factor was the reason for me the 4th, and I think they're going to qualify. Yeah, I think the very fact कि चेन्नई यहाँ पर है और लोग सिर्फ धोनी के बारे में बात करते हैं, you can just talk about
how pivotal Dhoni has been in this season की चेन्नई यहाँ तक पहुंची. हालांकि मुझे लगता है apart from Dhoni, I think the two most important players, for maybe three, four, but these two especially on the batting side, has been Rituraj Gaikwad, number one, Yep. and second is, I think मुझे लगता है धोनी से ज्यादा इनका contribution रहा है. I think is Rahane. I think No, yeah, I don't know. And I don't get me wrong. I completely agree. Rahane or Gaikwad are important, but I'm saying captaincy, the man captaincy, management of of course. the Yeah, man reason management of players. this is the same squad like your RCB, like your Delhi, like your Mumbai. I would think either Sunrisers still has a better squad. The only reason is the way the captaincy, the leadership has taken this to top four. Yeah, I mean, That's the only thing. या इसलिए मैंने बोला. आई थिंक मिथ द मैन धोनी. मुझे लगता है कि आप मुझे लगता है पंजाब के चांसेस काफी कम है नाउ कंसीडरिंग व्हाट सीएसके where currently it stands in the number and the matches that they are going to play next. तो बस मुझे एक ही है कि व्हाट इफ रहाणे का परफॉर्मेंस थोड़ा डिप हो या फिर गायकवाड डजंट परफॉर्म वेल. मुझे ये दोनों बैट्समैन परफॉर्म, दोनों में से एक आई थिंक एक और प्लेयर जो चेन्नई has been a good performance, Shivam Dube. Yeah, I'm Shivam put the Dube, score of the last game for reference point. If you look at it, Shivam Dube yeah, scored 52 runs of there. Moeen yeah, Ali came, the Ravinder Jadeja, they've chubbed in, but वही है कि players हैं, they are players. I think, yeah, I think मुझे मुझे They बस have a यही लग easy रहा है run कि in. They just don't wanna, बोलते हैं ना, I think it's a don't wanna perfect screw case. up. It's a perfect case. You have few good players playing well, and you have certain chunk of players which Dhoni is master in marshalling them. Correct. Likes of Santner, Jadeja, Moeen Ali. I think this is a perfect recipe. This is a ऐसे recipe. players. और हमने एक चीज बोली थी जो स्टार्टिंग में ऑफ द सीजन में, और आई थिंक वो ट्रू होने वाला है. सेकंड हाफ ऑफ द सीजन में पिचेस स्लो होने वाले हैं, और यहाँ पे आपके 3 स्पिनर्स घूम रहे हैं, तो अच्छे स्पिनर्स. 3 अच्छे स्पिनर्स. तो इट इज द प्लेऑफ्स इज फॉर देम टू लूज. मैं ये कहूंगा कि इफ they really have to play a really bad in the next few games and throw the games away for them to not qualify. Right. It's very But surprising. I mean, just one thing. I mean, there's very little of Ben Stokes in this entire IPL. and I think that is for me a surprise thought कि Chennai hasn't set the world alight, and yet they are in the top 4. Right. They have been, Speaks I felt they have been volumes. under the radar. Thoda under, we knew Gujarat was consistent and Gujarat was just doing what Gujarat does. LSG has been this swashbuckling Kale Myers and all this, but I don't know. I have been very, very impressed with the way these guys have managed it. Yeah, I think ये धोनी का शायद last IPL है. I don't know if you're following, if you've seen few matches. I think even if he's playing in the foreign territory, I mean foreign territory नहीं है essentially. वहां पे भी लोग धोनी को सपोर्ट कर रहे हैं. लोग येलो जर्सीज पहन के आ रहे हैं. So you can just imagine कि धोनी का क्रेज है. आई थिंक यू आर राइट इन टर्म्स ऑफ टीम. सीएसके थोड़ी अंडर द रेडार है, लेकिन जब सीएसके का मैच हो रहा है, मुझे ज्यादातर लोग धोनी धोनी के बारे में, धोनी की कैप्टनसी के बारे में, आई थिंक एंड वी स्पोक अबाउट इट इन आवर टीम रिव्यू. आई थिंक धोनी और ये जो 2-3 चेंजेस हुए हैं रूल्स में, आई थिंक ही इज अ मैन हु कैन easily take gambles and play around with these rules far more efficiently than any other captains and management. So I think Correct. Chennai का सबसे बड़ा advantage, apart from Rahane being on form and rest of the other players who are chipping in very well, is Dhoni. I Correct. think And the and one stalwart. more thing, I'm just looking at the fixtures. They are playing 3-4. They are playing 4 games in Chennai, and they are playing 4 games in Chennai against likes of MI and DC and KKR. Yeah. Who don't See, have that batting power. I think you agree. I mean, there is still a weakness in their fast bowling. But सारा I mean, you got to weakness give. है. मैं वही बोल रहा हूँ ना.
इतनी got to वीक give it टीम to ही him. चौथे पोजीशन पे आई है, यू हैव टू गिव इट टू देम दैट the run in for them is not very hard. Yeah. Conditions are right for the spinners to attack in Chennai, and they're playing the lower or the ranked teams. Like Akri game is against Delhi in Delhi. They only have one or two tough games. All they need to do Correct. is they just need to do what they do, and Dhoni does the man management here, leadership aspect of it, and then expect some chipping around from Rahane, Ruturaj Gaikwad, Devon Conway, Moin Ali, Ben Stokes maybe coming in through in here and there, and it is for there to lose. मैं वही बोल रहा हूँ कि they have to play really really bad for them to not qualify. Right. 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 Let's go to the top three now. We want to wrap up as well. So बात करते हैं. For me, the surprise of the tournament is LSG. I knew कि they will be in the top four, five, six. मैं सोच रहा था. Squad wasn't exactly brimming with super talent. Nicholas Puran wasn't the guy of what we saw in Sunrisers yet. Puran, Myers, Toynus. If you look at the last 5 games, they bet Punjab massively, 50 runs, and that too they've scored 257. They lost to Titans. I think this was a thing which would sting them hard. That low scoring game they are बहुत जीतना चाहिए था. This was a game they should have won. They won against Royals again very closely. They lost to Punjab Kings. This I think was a surprise for them. They won by 1 wicket against RCB. They bet Sunrisers comfortably. They bet CSK, sort of a close game, and then Delhi Capitals comfortably इन्होंने हराया है. So there is that they lost a couple of games. It's again one of those things where things have fallen into the place, but ऐसा भी नहीं है कि they have been too terribly bad. For some strange reason, despite Rahul not scoring well and not doing at a higher pace, their run rate is good. They have somehow held it. And if you look at the run in जो है उनका, रन इन थोड़ा मुझे लग रहा है कि ट्रिकी हो सकता है, इसलिए just why I'm saying it's not over for them yet. They're playing RCB. They have to play CSK. They have to play Gujarat. They have to play SRH. They have to play MI. They have to play KKR. So they don't play Delhi. They don't play Punjab. They're not playing these guys. They're playing either the top team or some of the lower ranked team. SRH can blow them away. Gujarat team could be a tight game. KKR can be a hit and a miss. MI they could win. CSK could be a close game. RCB. So मुझे लगता नहीं है कि it's over yet for them, but I mean they are still. I mean they just need to win 3 out of the next 5 or 4 out of the next 8. You can say to call Yeah, through. which I think they should be able Which to. they should be able to, but yeah, surprise for me. Rahul is doing the absolutely ridiculous IPL performance in my opinion. Yeah. Rahul should be with Yeah. Atia and when the Shetty Parivar. He should not be playing. And SRS and LSG will win this. That is how he has dragged this team down. And despite this is वही है ना जो धोनी का opposite है ये. Chennai is not that thing, and then Dhoni is taking them above above the punching above the bag. LSG is as a good team, and if without Rahul, they could be even a better team, and then Rahul is actually dragging them down. Yeah. So I think it's Gambhir behind the scene who is kind of doing a few things for them. Maybe. I think Kyle Myers. You can just imagine they have Quinton de Kock, who came in a little late, and he must be wondering now. I think he's not going to do that mistake next time, even though I would want him to play for South Africa. Um, he must be wondering what has he done wrong not to be playing, but he knows Kyle Myers hasn't done anything wrong for him to be out of the team. Correct. And he has kind of surprised me. I know he was a good player. I think मैंने उनके बारे में बात किया था because he played decently well against South Africa before the IPL. Lekin he has surprised me the way he is playing slow bowling or the spin.
तो वहां पे मुझे उनका सरप्राइज एलिमेंट रहा है, ही हैज बीन डिफरेंस, बोल सकते हैं ना कि आप 130 140 का स्ट्राइक रेट, क्योंकि आप मेजोरिटी ऑफ द बैटिंग ओपनर्स देखिए अराउंड ऑल द टीम्स बारिंग गायकवाड, जो वो मुझे लगता है 130 140 के, लेकिन ही इज आल्सो प्लेइंग 150 160 स्ट्राइक रेट से खेलते हैं. Kyle Mayers possibly is the only batsman who can score very quickly. And in certain cases, if the bowling is fast, a medium pace, or the bowling and the pitch is flat, he can score up to 200, if not more. So Kyle Mayers has been a very good addition. और एक और जो मुझे लगता है कि वो has been a differentiator is Nicholas Puran. एसआरएच में पता नहीं उन्होंने इतनी क्या बिरयानी खा के आते थे वहां पे कि वो नींद उनको में रहते थे हैदराबाद हर वक्त पसंद नहीं बैठ. आया यार। एक तो बिरयानी शहर छोड़ के दूसरे बिरयानी गए हैं यार, इतना भी क्या वो डिफरेंस आ गया है? हाँ, He तो probably मतलब prefers ही लाइक Lucknowi सो ही Nawabhi प्री biryani लक over so he Hyderabadi likes Lucknow, biryani. so he likes Lucknowi biryani than Hyderabadi biryani. So I think दो Uh, तीन जो प्लेयर्स जो ऐड हुए हैं यहाँ पे लखनऊ में, I think they have been pivotal where to the performance of LSG and where they are right now. I'm pretty sure. I can stick my neck out and say that they are going to be in top four comfortably. They have to play really then badly. again, like Chennai, they have to play really badly not to throw it away. हाँ, उनकी बैटिंग भी और उनकी बॉलिंग भी इज प्रीटी Oh, गुड. doing well, doing well. रवि बिश्नोई है यहाँ पे. और एक दो यंगस्टर्स, दो इंडियन यंगस्टर्स भी हैं जो गुजरात टाइट ये सॉरी एलएसजी के लिए अच्छा खेल Correct. रहे And हैं. I think that's the hallmark of all the top three. Indian teams, Indian players have done well. Ayush Badoni hai, Yash Thakur, Ravi Bishnoi, all these players have chipped in, and I think that is where the And finally Mr. Gambhir, I think I can say, because I don't think so Rahul has any brains. uh, like Rahul should lead Venkate, the team. you must see Venkatesh Prasad tweets. Man, I don't know. He is He's witty, he's witty. I think the only thing possibly is sarcastic. left is the only thing which is left with the barrage of tweets that he's tweeted against Rahul in the last 3 4 months, starting the Australian tour, is to hold his neck. That's the only thing left, or to kill him. Yeah, Uh, I think tragedy. I think the way they're using Marcus Stoinis now. I think last time around, Marcus Stoinis used to come sometimes 5 6. I can remember an instance, a couple of matches where he came in 7 as well. I just couldn't imagine what is the rationale behind sending Marcus Stoinis at that position. मुझे लग रहा है कि मार्कस स्टॉइनिस को भी ये मैचेस में थोड़े मैचेस में उन्होंने अच्छा यूज किया है. आई थिंक मार्कस स्टॉइनिस, काइल मायर्स, फिर एक और जो उनके Ayush Badoni, I was putting निकोलस the पूरन, scorecard here. पूरन. Kunal Pandya, Uppak Huda. हाँ, हुडा मुझे लग रहा है कि एक और थोड़े सेंटर परफॉर्मर रहे हैं, थोड़े मैचेस में खेल रहे हैं, नहीं खेल रहे हैं. आई I'm थिंक ही telling इज. you, LSG will win despite Rahul. LSB will lose because of Rahul. Yeah, Rahul is the crux for them. I think they Like lost the misfortunes. penultimate. They lost penultimate match because of Rahul. Yeah, even the 257 game, Rahul has a strike rate of 130. Why are you in the team, man? Oh, you why? Let's leave Rahul. I'll probably bash him as well I on think Twitter. I think he should volunteer himself He should to step out. he should volunteer himself to. He reminds me of Lakshman when Deccan Chargers was playing. When Adam Gilchrist in 2008, 2009 took them out, and then Lakshman was the captain and didn't do jack. He reminds me of Lakshman. Lakshman was super nice, and I was like, "मैं नहीं करूँगा." Rahul should learn from that and then give it up and I think the last that happened was not too far back. I mean, Morgan did it. So, correct. Ian Morgan has a good reputation in T20s. I mean, I would Yeah, say more than KL Rahul, and he stepped away. So I think he can, yeah. but he can. I mean, let's not spoil the balance of the team. I think है तो है, रहने दो. Yeah. He- Okay. Well, let's with our top two teams. We only like I would say not much to talk. I would think they are there. They will be there. For me, they are looking the favorites to be again. Rajasthan Royals was my prediction to win the IPL. My predictions are still on course.
They're going to be in the playoffs. They're going to be in the top two. I want them to win this time, and I think they are on course to do that. And the number one team is Gujarat Titans. They have been amazing. They have just lost two of the games so far. And अगर हम दोनों इसी cover कर रहे हैं because I want to end it. I have to leave as well. But I would say this: Rajasthan Royals have pretty good run, and they have to play MI. They have to play GT. Well, that's going to be a tough game. SRH, KKR, RCB, Punjab. I don't see them not losing from here. I see them winning. I see them going forward. I see them, getting into the finals. Gujarat Titans, on the other hand, have even more comfortable run in. They just have left with DC, RR, LSG, MI, SRH, and then RCB. Nothing fancy for them. I think even if they lose here and there one game, I think they're in. For me, these two are now looking IPL winning material, 1 and 2. Right. I know Rajasthan Royals is on par with LSG in terms of points and with Chennai Kings, but I have a feeling they'll push through forward. The last two losses they had in the recent times, I think that would have hurt them a lot more, RR. But I have a feeling they'll just go through that. And I'm looking GT versus RR final now. Yeah. आई थिंक ये राजस्थान रॉयल्स का बस एक वरी रहेगा कि जॉस बटलर का थोड़ा सा फॉर्म डिप हुआ है. ही इजंट लुकिंग लाइक द जॉस बटलर दैट वी नो. इनफैक्ट यशस्वी जायसवाल इज प्लेइंग लाइक जॉस बटलर. या फिर यशस्वी जायसवाल 2-3 सीजन से थोड़ा ऐसा खेल रहे हैं, लेकिन जॉस बटलर इज नॉट प्लेइंग द वे जॉस बटलर डज. और सेकंड है, आई थिंक मैंने इसके बारे में लास्ट एपिसोड में भी बोला था. आई डोंट नो इफ यू वॉच टुडेज मैच, एंड आई मेड दैट पॉइंट कि इन द लास्ट एपिसोड या उसके एक एपिसोड पहले भी, I think teams have started to figure out राशिद खान. और इस सीजन अगर आप देखेंगे, I can't recollect that he's gone for so many runs. I'm not talking about only today's matches. मुझे लगता है by far the worst IPL of Rashid Khan in terms of economy rate. I'm not saying it's been the worst IPL for him in terms of economy rate. I think batsmen have started to figure him out. I mean, it possibly took them a decade. I don't know. It took them a decade. That's the thing I was about to say. That yeah, even if they figured it out, it's like almost 8-9 years so in the later. T20 format, yeah. So लग रहा है, लेकिन you never know. He's a champion bowler. He might come back with a bang. But yeah, these are the only two concerns. I think ये दोनों team look hot favorites. I will be very surprised. They have just nailed it. I don't know how they've done it. For me, Gujarat, I thought was laga one game, one season wonder. But again, Shubman Gill, Sai Sudarshan, Vijay Shankar, Bharat, Abhinav Manohar, Saha, Hardik Pandey, even Mohammad Shami. I mean, balance. They have perfected the balance. For IPL to win, you need balance, and they've done it. And both of them have done it in this extent. And it's between them, I feel now, how this would happen. Right. And they've got a new star performer. I mean, last year it was Miller, and Miller has been playing well. I think you must have seen today's match. It was Vijay Shankar. Vijay Shankar के 2 matches मैंने देख लिए, he's played tremendously well. So very difficult to pick between GT and LSG. Not LSG, I think RR. Yep. I think they are both fine teams. I think I predict them to be. So I think we kind of now think that these two would probably be the possible finals spot. Possible finalists. I still think RR. I'm pretty still putting them as a top favorite to win this league. Yeah, I mean, let's just hope they do that. But Gujarat proving that they're not one season wonder. They are an IPL star outfit, showing others how it's not all about money or star players, but it's the right captaincy, right player. And I मुझे वो हार्दिक पांडे, he tries to copy धोनी, मुझे लगता है he's like emulates a Dhoni in terms of his style. I could be wrong. You are absolutely right. मतलब अगर आपने उनकी बैटिंग भी देखी हो, he's not the Hardik Pandya that he was a couple of years back. He's not. I mean, वो अब तो settle down कर रहे हैं like Dhoni. I think I don't know why is he doing it.
और धोनी की प्रॉब्लम मुझे लग रहा है लास्ट 5-6 ईयर में यही हो गई थी कि ही वाजंट द धोनी दैट ही वाज बिफोर 2014 और 2013. आई डोंट नो व्हाई इज ही डूइंग इट. आई रियली डोंट अंडरस्टैंड. मतलब मुझे वो इम्पैक्ट नहीं लगता हार्दिक पांड्या का जब वो ऐसी बैटिंग करते हैं. आई रियली डोंट लाइक Yeah. इट. आई थिंक इट्स बीन पॉइंटेड आउट बाय सर्टेन कमेंटेटर्स एज वेल, सर्टेन एक्सपर्ट्स एज वेल. But yeah, I think as long as you're Yeah. copying Dhoni and you're doing it well, I don't think so anyone's gonna point harsh या fingers at him. वो दोनों के प्लेयर्स में बॉलिंग अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं इन टर्म्स ऑफ He's बोथ दिस bowling. थिंग एंड इंडियन कंटिजेंट आर डूइंग वेल सो दे नॉट रिलाइंग Yeah, ऑन जस्ट फॉरेन कंटिजेंट देयर सो चलो we'll wrap up here. Thank you everyone for watching. तो आज लंबा हो गया था because we had a lot of things to cover. We had a bit of a gap. We'll try again, to see if we can get one more next week. But please like the video, please subscribe, please share the video to your friends and family. Yeah, keep watching our channel for more IPL content. We'll talk again later. yeah, yeah. Bye. Bye bye. Like, share, and subscribe.